And good evening everyone, welcome to StudyIQ. And जो आमर MCQ सीरीज चलती जोटा आपंकर OPSC जोटा आम सीरीजटा आरंभ करते तो सीरीज आज जियोग्राफी आज 6 लेसन दैट मीन्स जो MCQटा आपंकर फटाफट शेयर कर दिंतु फ्रेंड्स मान सहित सो दैट से मैंने भी जानीपर कि हाँ सेसन स्टार्ट हो गला लेट द अदर्स टू नो and join everyone, right? So just a minute. Yes, good evening to all. Good evening Satru, Susmita. Now start करिबा तले आज सेशन को हम स्टार्ट करिबा एंड ऑलमोस्ट यू आर जॉइनिंग बहुत जन जॉइन करते बाकी हमें गोटे दुटा क्वेश्चन कला भितर बाकी मैंने जॉइन करते डोंट वरी दे आर आल्सो पंक्चुअल एंड डेडिकेटेड एज वेल चल जीवा स्टार्ट करिबा सेशन को गुड इवनिंग सुजाता सुस्मिता सत्रु चले फिर we will start the sessions from the MCQ, right? And the first questions is before you. The first one is before you. The first question is, which of the following states do the tropical evergreen wet forest occurs naturally? It's about 2019 UPSC questions. This one is what? Just a minute. It's a what? Just forget about that one, right? Just a minute. Just a minute. Yes, this is the first questions is before you. (2019) wala question UPSC. This one is UPSC question and you have to go through this, right? And the first one is before you. Good evening Afrin, Sonita as well. चलो फिर 18 वाला क्वेश्चंस देखा व्हाट इज आंसर देखा आंसर फटाफट को हिजबो चलो तो आंसर जे देखबा आफरिन कहूची बी सुश्री संगीता नायक गुड इवनिंग सोनीता गुड इवनिंग शत्रु इज सेइंग बी 2 and 3 केरला एंड त्रिपुरा ओके ना देखा आंध्र प्रदेश रे तुमको देखा जबो नहीं ओडिसा देखा जबो नहीं सो दैट मींस हमें जदी एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया देखिबा in India the evergreen forest is generally found here in Western Ghat. The evergreen forest is found here in Western Ghat. The evergreen forest is also found here. That means the evergreen forest also found here in India. So this is northeastern of India, Western Ghat and your Andaman Nicobar. And where? Andaman Nicobar. This is the three region where the evergreen forests are found. That means here, here. So these are the three regions where your evergreen forests are found. That is Western Ghat, Eastern Himalaya and parts of and Northeast Andaman Nicobar, right? And that is why answer would be B. Odisha will have dry deciduous and semi-evergreen forest, moist deciduous also there. But Tripura, Kerala, Andhra Pradesh does not have moist deciduous. Andhra Pradesh largely dry deciduous forest. Okay, that will be there. And so this is for the evergreen forest. What would be the condition? High humidity, high temperature, high rainfalls. What is the condition required for the tropical wet evergreen forest? You need what? High rainfall, high temperature and high what? Humidity. So that is the criteria you need for that, right? Chalo fair. Now we will come to the second one. The second one is here. Earth magnetic field has reversals every few hundreds thousand years. When the earth was created more than 400 million years ago and there was 54% oxygen, no carbon dioxide was there. When the living organisms originated, they modified the early atmosphere of the earth.
Yes. The second questions. Second number questions. And the answer keys below there, two more answer keys are there, that is 1 and C and 1 and 3 and 3 only. So let me write here so that it would be easy to read out. Read out by easy ହେଇଯିବ C 1 and 3, D 3 only. Yes, come on. Answer जे देखवा, no, this is what, no carbon dioxide, 54%, right? So that means what, this 2 is correct. So C is the right answer. So C is the right answer. My lifestyle also joining me, Sumitra also joining me, Susri, Sasmita, everybody now joining me. Okay, Dipti also saying C. So this was the second question. The first questions evergreen forest upare thila. And the next questions we will comes 2017 से UPSC पचारथिला क्वेश्चंस 2017 क्वेश्चंस आस्थला जोड़ा कि हमें ऑलरेडी जानी छे एलिनो एंड लालिना ऊपर एंड अगेन 2026 is going to be the लालिना year 2026 also going to be the लालिना year. Samir also joining me. Good evening, Samir. Sasmita is saying that 0.4 to 0.5% of carbon dioxide was there during that time. Okay, next. This one. The La Nina is characterized by unusual cold ocean temperature in the equatorial Indian Ocean, whereas El Nino is characterized by unusual warm water temperatures in the equatorial Pacific Ocean. The El Nino has adverse effect on southwest monsoons of India, but La Nina is having no effect. चलो फिर ट्राई करो सुमित्रा कहूची A, Dipti is A, Susri is A, Sujata also going for A, my lifestyle is going for A, Sikha is going for A. ट्राई करियो देखिबा में एलिनो लालिना शायद तमने ध्यान से ताली पढ़िनो राइट. Satru is saying A. से कहूची लालिना is characterized by unusual cold ocean temperatures in equatorial Indian Ocean. This is not Indian Ocean. This should be Pacific. This should be what? East Pacific. This should be East and Central Pacific. Not Indian Ocean. Not Indian Ocean. El Nino is characterized by unusual warm water temperature in the equatorial Pacific. This is also equatorial and eastern. Equatorials and eastern. So that is why this statement is wrong. El Nino has adverse effect on southwest monsoon, whereas La Nina no. Now La Nina is having positive effect. It will have what? Positive effect. La Nina asle positive effect habani on the monsoon. No effect kemti habo. So that is why D is the answer. That is why what? D will be the answer. What would be the answer? Answer would be D. It would be what? D. It is not central. It आमे साधारणतः कहबा यू मे से के जदि आमे देखबा सेंट्रल रे तो तुमको देखा जीवनी देखा जाई भी पारे. Both wrong. Both will be wrong. Right. So this is no effect. No effect तो हबो अधिक रेनफॉल हबो. Then Indian Ocean dipole. Answer की एम देखि देबा 2 only, both and neither. ताले मु लिखि दउछि एठी
2 only, 1 and 2, neither. देखा ट्राई करो. The Indian Ocean dipoles phenomenon is characterized by difference of sea surface temperature between tropical western India, Indian Ocean and tropical eastern. Okay, western and eastern gala. An Indian Ocean dipole phenomena can influence the El Nino's impacts on the monsoon. देखिबा ट्राई करो. 4 number, this is 4 number B coach is Satru. My lifestyle is saying B. Everybody is going for B. Okay. For B. ये कहीं हेनी. Indian Ocean dipole is characterized by the difference in sea surface temperature between tropical western Indian Ocean and tropical eastern Indian Ocean. Se kochi with reference to the Indian Ocean dipole, sometimes mentioned in news, which of the following statement is correct? अच्छा ये तो इंडियन ओशन डाइपोल जेतला हम डिस्कस करूचे दैट इज द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर तो ही कुआ जाउचे ना सी सरफेस टेम्परेचर तले वन काई की होबनी. हां एनी रीजन? सपोज तमर इंडिया इज हियर, दिस साइड इज अफ्रीका, दिस साइड अरेबियन पेनिनसुला, ऑस्ट्रेलिया इज हियर, इंडोनेशिया इज हियर. जदि तमर एठी वार्म वाटर अछि, if here would be cool water, this is what positive phase. और जदि एठी cool water रही गला, एठी warm water रहिला, this would be what negative phase, this would be negative phase. So that means it's a what oscillation of temperature. That means एटा कोनहि जबो simple oscillation of temperature. Tropical. एटा इक्वेटोरियल हि थांदा कहउछ ना कोन? the sea surface temperature ट्रॉपिकल ही तो में नबा बेसिकली इक्वेटोरियल्स और ट्रॉपिकल्स तो सेटा में तो दैट मीन्स तो एटा तो ठीक ही हबो. कौन एटा लिखे छी बट पैसिफिक ओशन मेंशन काई कोठी पैसिफिक ओशन ओ एटा ओ हो शर्ट ओ एटा पैसिफिक मेंशन है छी. ओके 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 मु से मुकिल कोन कोठी भूल होची जणा पडुनी. एटा पैसिफिक लिखा है. ओके ओके yes, so this is हाँ से मु पढ़ी ठीक से मुझे खोजु कौन पर भूल कौटी ये कौन असुविधा कौटी होता ईस्ट वेस्ट हेल्ले तो हो. ओके चलो ठीक अच्छे. ओके ओके थैंक यू. नेक्स्ट. बढ़िया बढ़िया. नेक्स्ट. चलो चलो नेक्स्ट. ग्रेट ग्रेट. चलो नेक्स्ट. से क्लियर कहीं होनी. Which of the following brings rainfalls to the south west part of Indian peninsulas during winter? Which of the following brings rainfalls to the southwestern part of Indian peninsula during winter? Cyclone depression, retreating monsoon, northeast trade wind, western disturbance. चलो ट्राई कर हिजबो. देवाशीष इज सेइंग 5C, सुजाता D. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो मु तुमको केबे कहिनी कि सेठी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हुए बोली. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एते लो लैटिट्यूड को तो जीवनी. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एते लो लैटिट्यूड को जीवनी. अफ्रीन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कोठी हुए इंडिया रे. दिस रीजन नाउ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विल हैपेंस हियर. एठी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हबो. एठी कोन हबो तमरो हियर इट वुड बी northeast. That means हम कहबा northeast monsoon. It would be what? It would be monsoon.
and that monsoon will be bring by whom? Northeast trade wind. It would be northeast trade wind. So that is why ये western disturbance एठी हबो ना पंजाब हरियाणा some parts of Rajasthan यूपी हिमाचल प्रदेश JNK एई सब region रे हबो ना right got everyone तो सेथि पई so C will be the answer ना एटा बुझा पड़िबन कहा को बाकी एई टाइम रे तमे कहबे सार डिप्रेशन काहे की हबनी एटा बेटा विंटर चली छे आज दिस इज व्हाट विंटर जति हम कहिबा so in case of what winter that means winter रे तमर एठी साइक्लोन हबो नाही ना नो साइक्लोन winter हबनी western disturbance एठी आसी परिबो नाही right retreating monsoon or northeast trade winds so that is why this would be the right answer next next question which of the following is the characteristics by the tropical savanna climate देखो tropical savanna climate easy questions देखो ऑलरेडी तुम मैंने जानी छो सावाना कोठी देखा जाए मॉनसून क्लाइमेट रे देखा जाए आराम से करि परिबो टिके दिमाग लगाओ आराम से ही जीवो मु आउरी क्लू दे दोछि इट्स ए व्हाट Köppen climatic classification AW type of climate. In India, we call it what? Monsoonal climate. In Köppen, we call it what? AW type of. Right. That means what? देखो साभाना that means आमी जो हमरो deciduous monsoons रे आमी कौन कहिबा एटा monsoonal forest टा कौन थाए deciduous this is what deciduous ପାଇଁ କଣ ଦରକାର alternative dry and wet conditions and that is why this would be the answer so answer would be A and there will be cross ताले हम कहिबा A answer किए देइछि A is given by शत्रु बाकी आउ कही तो देनी समस्त भूल हो कोन ओके बुझी परछ ना बुझी बना एटा 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 यूनिफॉर्म टेम्परेचर हेले केमथि हो थ्रू आउट द ईयर जदी यूनिफॉर्म टेम्परेचर हबो दैट मींस एटा तो एवरग्रीन हे जिवो एटा कोन हे जिवो इधर एवरग्रीन हबो नहले पोलार हबो दीटा जगह रे तो यूनिफॉर्म टेम्परेचर देखा जिवो ना इधर एटा पोलार क्लाइमेट हबो नहले यूट तो हमकु मॉनसून डेसिडस फॉरेस्ट कोठी हुए अल्टरनेटिव ड्राई एंड वेट कंडीशन so this is alternative dry and wet condition Sasmita also okay chalo next 7 in India which one of the following types of forest is a teak dominant tree species chalo next teak dominant these today's questions are based on climatologies जागु सागवान कौच सागवान फॉरेस्ट जो आमी कौचे दिस इज आल्सो व्हाट सागवान आमी जो कौचे सेवन दीप्ति कौची ए आफरीन ए लक्ष्मी प्रिया ए शत्रु शिखा समस्त ए बहुत बढ़िया यस ग्रेट आंसर सो दैट वुड बी डेसिडस ताले मते को साल जदि मु कहबी साल कोठी देखा जिवो साल साल वेयर विल बी साल साल कोठी देखा जिवो जैक फ्रूट कोठी देखा जिवो जैक फ्रूट कोठी देखा जिवो साल तुमको साधारणतः मॉइस्ट डेसिडस कोठी देखा जिवो मॉइस्ट डेसिडस टू एवरग्रीन कोठी देखा जिवो एवरग्रीन जैक फ्रूट इज एवरग्रीन जैक फ्रूट टा कोन इटसेल्फ एवरग्रीन
चलो 8 number. Next questions. During the thunderstorms, the thunder in the sky is produced by what? 2012 रे यूपीएससी पचाची क्वेश्चंस, 2012 यूपीएससी क्वेश्चन. Devasis Bharati Panda is saying, as Odisha and Chhattisgarh, all this region. During the thunderstorms, the thunder in the sky is produced by what? Option 1 is melting of cumulonimbus cloud in the sky, lightning that separates the nimbus cloud, violent upward movement of the air and the lights, and lightning, and by lightning. Thunderstorm. चलो फिर 8 नंबर. एट नंबर. हाँ देखो लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म कहीं की ही थाए साधारणतः. देखो लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म दैट हैपेंस इन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स. साधारणतः ये जो तुम क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड अच्छी ये क्लाउड रे ही देखा जाए लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म. व्हाई? बिकॉज ऑफ थिकनेस एंड vorticity of the cloud. Because of what? Thickness and vorticity of the clouds. In the vorticity of the clouds, the positive particles remains here and the negative particles also. Positive and negative particles are there. So there is internal circulation happens, that means oscillations. तो ये भितर कौन सर्कुलेशन गोटे चलता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज गोटे सर्कुलेशन होता है. बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलेशन एंड द कंट्राक्शन ऑफ द क्लाउड, ये जो सर्कुलेशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज रो जो तांकर जो ओसिलिएशन, बेटर टू से व्हाट, ओसिलिएशन विद इन द क्लाउड. तेणु क्लाउड जदि पतला क्लाउड हम ताले हबो नाही, and that is why the right answer would be what? D. That means I would say the right answer would be D. The violent upward movement when these particles will move off from here, it will move off and downs. So this circulation when starts in the clouds, because of that the thunderstorms and lightning that will happens. Okay, so that is the answer would be D. The answer would be what? D. The answer would be D. 8 number. Next 9. During the thunderstorms, एटा किसी ठीक लगुन ना कौन कुछ वायलेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर्स. देखो बाय लाइटनिंग भूली जाओ ना, एटलिस्ट एति की भूली जाओ. एटा तो खाली ठीक होची ना, रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स एटा भूली जाओ. रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट. बाकी तो स्टेटमेंट करेक्ट ना, कारण अपवर्ड मूवमेंट जदि हमें ओसिलिएशन क्लाउड रे न हबो केमथि हबो. आ क्लाउड ता काहे की माने जो थंडरस्टॉर्म काहे की हुए जानचो? Because of the compaction of the cloud. Because of what? Compaction of the cloud. That is also one of the reason. देखो why not ए जोटा तमे कहउछ एठी लिखाइ छी मीटिंग ऑफ, एठी कोन लिखाइ छी? मीटिंग लिखाइ छी. दिस इज व्हाट? मीटिंग. दिस इज एथरे तुमको एक कथा कुआ जाई नहीं, तो एथरे खाली मीटिंग कहि छी ना. ये जो वायलेंट अपवर्ड ऑफ ड्राफ्टिंग डाउन ड्राफ्टिंग एटा कुआइ छी कि ए खाली कहि क्लाउड टा मीट करूची. जेतले भाबंतु जेतले क्लाउड गुडा मीट करिवो, लेट्स से हम जदी गोटे कथा डिस्कस करिवा, मीटिंग ऑफ क्लाउड विल हैपेंस व्हाट? एठु गोटे क्लाउड अछि भाबंतु एंड हियर इज ए क्लाउड. ए आसिला तो कोन दैट थिकनेस ऑफ क्लाउड विल इंक्रीज और आमे कहबा कोन हिजबो एटा गोटे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड रे कन्वर्ट हिजबो. 9 नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चंस. जेट स्ट्रीम्स आर व्हाट? ए तो इजी क्वेश्चन पूरा. एटा कहि परिबन ना, ए तो समस्त कहि परिबो. ये समस्त कहि परिबो जेट स्ट्रीम कोन. चलो फटाफट दियो. जेट स्ट्रीम आर व्हाट? ए तो दिस इज नोन टू एवरीवन, राइट? कि व्हाट एग्जैक्टली द जेट स्ट्रीम. चारि प्रकार जेट स्ट्रीम अच्छी. चारि तुम आंसर दियो, से भीतर मुझे डिस्कस कर दिए. तो जेट स्ट्रीम जदि तुम मन को कह जाए कि कहीं देख जेट स्ट्रीम केते प्रकार समस्ते जानिछ. जेमती तुम गोटे अच्छी व्हाट दैट इज आमे कहबा पोलार जेट स्ट्रीम कथा नहीं जाओ. देयर इज सबट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कथा नहीं जाओ. देयर इज व्हाट ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कथा नहीं जाओ.
there is polar night jet stream katha nei jo polar night. So four type of what, there is four types of jet stream achi. For the formation of monsoon we need these two, what that is ame कहबा कोन polar night दरकार नहीं हमको, we need this one and this one. And the most important for the formation of monsoon is easterly jet. So that is what easterly jet. That is what easterly jet. तो आंसर समझते तो ठीक देइछ, एटा डी हबन, ऐसे इट्स अबाउट सी, इट्स अबाउट सी. बाकी जेट स्ट्रीम कहीं की फॉर्मेशन हुए, जेट स्ट्रीम्स सब मानक जो हार्डलेस सेल, फेराल सेल, पोलार सेल जो रही से भितर तुमको जेट स्ट्रीम देखा जाए ना. 10 नंबर, द रिवर्सल्स ऑफ विंड इज टाइपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट. 10 नंबर, ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस. एबे आउ टिके पूर्वर मु डिस्कस करूथली. दिस इज monsoon also called as what? Answer दियो. The reversal of wind, this is what reversal of wind. Whether equator कोन reversal wind हुए कि Mediterranean climate कोन reversal wind हुए कि, देखो 10 नंबर. Hmm. 10 नंबर समीर कौची सी, सस्मिता कौची सी, सुश्री सी, शत्रुजीत, शुभकांत, Afrin, everybody is going for the C. Sikha is going for C. Lakshmi Priya going for the D. देखो D कहीं किया हुआ कहना, रिवर्सल ऑफ मॉनसून हैपेंस इन हियर. इक्वेटर रे हुए नहीं, इक्वेटर हबनी. इंडिया रे केमती हुए देखो, फॉर एग्जांपल इंडिया देखो जेमती तुमको खरा दिन आसीबो, दिस वुड बी विंड सिस्टम. जेमती शीत दिन आसीबो, द विंड पैटर्न विल चेंज लाइक दिस. सो दिस इज व्हाट रिवर्सल ऑफ विंड होनी. एमिति जाउथला पुनी एमिति वापस आसुची. So this is reversal, complete reversal of wind, and that happens in monsoonal climate. This happens in what? This happens in what? Monsoonal climate, right? So answer would be C, not all. Mediterranean type of climate where happens? Mediterranean type of climate, that means it would be 25 to 35 and maximum 37 जाई पर Mediterranean type of climate. Here it is what typically CS type of climate जोटा में Köppen climate is climate classification approach, and that is what lastly largely driven by the precipitation is largely driven by the western disturbances. So not all this, equatorial region does not have such kind of changes. Comes to the westerlies. Raja also joining me. Okay. The westerlies in the southern hemispheres are stronger and the persistence than in northern hemisphere. Why? ये भी बहुत important and easy one. Only if those who know the concept, it would be easy for them. The westerly in southern hemisphere, they are strong and persistent than the northern hemisphere. The southern hemisphere has least landmass as compared to the northern hemisphere. The Coriolis force is higher in the southern hemisphere as compared to the northern hemisphere. Yes, it's a pretty easy one. Don't get hasty हबर नहीं. बी मतलब जजमेंट टिके करके देखो है, आराम से दियो क्वेश्चंस, आराम से दियो. A, everybody is going for the A. Okay, बहुत बढ़िया. Satrujit, Raja, Frin, Sikha, Samir, Dipti, Shubhakan, my lifestyle, Sasmita, everybody is going for A. Yes, right answer is A. बहुत बढ़िया. एटा तो हमें पढ़ी चाहिए, तो बेसिक जिनस तुम जानिच. अच्छा साउदर्न हेमिस्फीयर वेस्टर्लीज को कौन कहुए? साउदर्न हेमिस्फीयर विंड स्पीड कहीं वेस्टर्लीज अधिक थाए. इफ आई से कि why the speed is more? Because of what? Less friction. The speed would be more because of less friction. Because of what? Less friction. And this is southern hemisphere. आपको कौन कहुए? The westerlies in southern hemisphere is called as roaring 40s, furious 50s, and serious shrinking. At 40-degree latitude, roaring 40s. At 50-degree latitude, furious 50s. At 60-degree latitude, this is also called as the serious sinking. Quote is southern hemisphere, not in northern hemisphere. These lines are important, right? मने चाहिए सब everyone है ना. बाकी तमरे कहबो देखो कोरियोलिस फोर्स हायर केमते हो. दिस इज कांस्टेंट, राइट? दिस इज कांस्टेंट. ओनली फ्रिक्शन वुड बी लेस एंड मोर.
Coriolis force is always constant. This is not going to ke northern hemisphere अधिक हबो southern hemisphere अधिक हबो. This is constant. Because एमती ना कि northern hemisphere अर्थ रो स्पीड अधिक southern hemisphere स्पीड कम सेमती तो हबनी. हाँ जे स्पीड एपट सेपट हबो ताले Coriolis force changes हबो, otherwise no change. Now questions number 12 2009 रे UPSC question पचाथला Savanna region. Question number 12. से कोची Savanna region कोठी देखा जाए rainfall throughout the years. It's a rainfalls in winter only, extremely short dry season. The deficient dry and wet. There is a what definite dry and wet season. It's a unique one and easy one as well. Lakshmi Priya is saying कि 12A. I don't know why you guys are saying rainfall is throughout the year. Whether it's have patience and go through the option, right? Don't be hasty and go through the swift move करो नहीं. Don't be के swift move जो करना थे ना कि swiftly moving through the options. Be have patience, go through easily. I am giving मतलब enough time to you. भाई देखो जोठी वर्ष सारा रेनफॉल हबो एठी तो एवरग्रीन हबो एठी कोन हबो तमरो एवरग्रीन हबोनी. Then how it would be possible? This would be wrong. If throughout the year rainfall will happens, then definitely that will have evergreen, not savanna. Not savanna, right? And if only winter rainfall is happening, that would be also xerophytic, that would be also xerophytic or deciduous, or I would say deciduous. That would be not savanna. So savanna will happens here. Savanna is what? Here. So that is why savanna would be a definite dry and wet season. And savanna is called as what? AW type of climate. बा कहिथिले आउ टिके पूर्वरु इंडिया रे जति हमें देखिबा, in India this region is AM type of climate, this region is AS type and this all region is savanna type of climate. एठी तमरो कोन evergreen, एटा evergreen रहइबो. This region is evergreen, एटा हला evergreen. एपटे तमरो ड्राई एवरग्रीन देखा जिवो and this whole region is savanna type of forest. एटा OPSC 3 थर पचारि चल सालानी. AW रो मीनिंग कोन? AW रो मीनिंग होची साभाना. ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ये सब रीजन रे साभाना देखा जाए जहाँ को हमें कहबा कोपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन AW टाइप ऑफ क्लाइमेट कम्स टू 13.1. Next, in India, during which of the following month does the southwest monsoon normally set in? ये तो बहुत easy कथा आपको कौन कहबी. But one thing I will ask you, there is a change. Now, this year 2025, this year हमें कहबा एई वर्ष in the year 2025 there has been a study published, or that means a study has been published, and that says the onset of monsoon is changing fast in India. That means it is saying, the study says that the monsoon that usually set in the coast of Kerala in the month of specially I would say June, in the very first week of June, is now changing to some other states. But this one is right, everybody is known that this would be the what first week, this would be the what first week of June, everybody aware of that. So that is why I would not go through. This one is the easiest one, right? But हाँ मोते कहीं भी जने को ए वर्ष जो मॉनसून रिसर्च आसीची कहा जाउची मॉनसून साधारणतः केरला रे ऑनसेट करे, बट एबे मॉनसून आउ गोटे को राज्य रे फास्ट ऑनसेट करूची ता ना कोन कोन. सो दैट विल बी योर नॉर्थ ईस्ट. सो नाउ यूजुअली हमें जानिचे कि मॉनसून कोठी आसे केरला रे, बट ए लेटेस्ट स्टडी सेज द मॉनसून इज ऑनसेटिंग हियर. Now there is a changing pattern in monsoon, and the monsoon is what onsetting here fast, then Kerala is second. So this is the changes is happening in the monsoon, and that is why the northwestern part of India, especially I would say Uttarakhand, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Delhi, these regions are getting maximum rainfall this year in 2025. Next, 14 number questions. Consider the following statements. The trade winds are due to the convectional circulations of the air. The trade winds are steady winds blowing from the subtropical high pressure to the equatorial low pressures. Which of the following are correct?
14 टिके दिमाग लगेले ही जीवो बस आपको दिमाग लगाना है राइट ओके everybody is going for the B Subhokant is going for 2 only and चलो फिर देखिए आंसर कौन this one is correct right this one is correct and everybody aware of the fact समस्ते जानी छ कि trade wind जदि मु ड्रॉ करके देखैबी how the trade winds comes like this here would be your equator this would be your subtropical high pressure subtropical hyper this would be now from here the trade winds blows like this trade wind blow like this right so that is why this one is correct so 2 is correct now this is convectional current this is what convectional circulation एथरे जदि तुमको कहि थांता tricellular model then correct ही थांता as this is given convectional circulation means convectional circulation केवल एठी भी ही पारे convectional circulation केवल एठी भी ही पारे convectional circulation कोठी भी ही पारे right and that is why so this would be wrong हाँ जदि से कहता tricellular models feral cell then it would have right as it is given only convectional circulation that is why this is wrong Lakshmi Priya this time you are correct and the B and now the 15 2044 a question pachachi UPSC this is again UPSC PYQ questions asked in 2004 climatology part कि among which of the following climatic factors which has one of the least effect on the terrestrial ecosystem had it be tricellular model that answer would have been both right as this is given simple it's about convectional cycle in the convectional cycle generally what happens in the what after afternoon it's like 3 to 4 like afternoon there would be rain happens come fast now 15 among which of the following climatic factor which one has the least effect on the terrestrial ecosystem temperature variation wind condition of sunlight and availability of water से कोइची कहार least effect on the terrestrial ecosystem एक देखो ताले आंसर दे देखिबा B कोची 15 B Afrin Sasmita wind B everybody is going for the B yes everybody is going yes बहुत बढ़िया तो it would be what wind yes the answer would be what wind बहुत बढ़िया great the answer would be the right one will be what yes it will be बहुत बढ़िया the answer will be B कारण देखो temperature variation जदि हबो ना if there would be variation of the temperature पूरा ecosystem ही change हो जिवो condition of sunlight जदि sunlight कम temperature ताले सबुठ important factors कौन जे ecosystem को govern करे that means कौन सी area रो ecosystem को govern करे किए water temperature soil right तो ये बहुत important and कौन water temperature soil ताले ये तीनटा सबुठ most important factors किए थाए water temperature and soil right एठी हमें देखले temperature एठी नहीं गले हमें soil एठी नहीं गले तो ये हमें वाटर नहीं गले हमें टेम्परेचर नहीं कंडीशन ऑफ सनलाइट तो सबुठ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर होची वाटर टेम्परेचर सॉइल कौन सी एरिया इकोसिस्टम ना ये तीनटा को ट्रायो को हमें आपको कौन कहू ट्रायो कौन सी जगह इकोसिस्टम ये तीनटा गवर्न करि थाए देन 2003 रे गोटे क्वेश्चन यूपीएससी पचारथिले कि मेडिटेरियन रीजन इज नोन फॉर द वर्ल्ड ऑर्च दैट इज ऑर्चार्ड लैंड मेडिटेरियन क्लाइमेट इज
नाउ फाइन ये आसला ओके थैंक यू ये आसला ना नहीं नहीं देखिल 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 अच्छा ओके ओके फाइन फाइन देख मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट्स कोठी देखा जाए साधारणतः वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट देखा जाए एक कथा ध्यान से सुनिबो कि मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट को हमें कोपेन क्लाइमेट रे सीएस टाइप ऑफ क्लाइमेट कहा जाए कोपेन रे कोन कहा जाए राइट सीएस ये कोठी देखा जाए वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट साधारणतः ये कोठी देखा जाए वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट रे देखा जाए राइट एठी कोन होई थाए साधारणतः फ्लोरिकल्चर राइट फ्लोरिकल्चर सिट्रस जोटा आम साइट्रस कहूचे साइट्रस फ्रुट्स तो ये सब बहुत होता है तो साधारणतः दैट मीन्स सो ये इज द आंसर सो इट वुड बी ये इज द करेक्ट आंसर हाँ ये कौन हम विंटरटा वेट हम समरटा ड्राए हम मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट रे कौन हम विंटर वेट समर ड्राए राइट ये रही कौटी देखा कैलिफोर्निया देखा वेस्टर्न साइड ऑफ साउथ अफ्रिका देखा चिले कोस्ट देखा वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया देखा राइट देन तुमको कैलिफोर्निया साइड रे देखा ये सब देखा आर ठीक ईस्टर्न साइड रे कौन देखा चाइना टाइप क्लाइमेट आर ईस्टर्न ये कॉन्टिनेंट वेस्टर्न पार्ट देखा कॉन्टिनेंट ईस्टर्न पार्ट कौन देखा चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट जोटा कि हम कहे मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट ना मैपिंग वाला क्वेश्चन को आसीबा हमें नाउ वी विल कम्स टू ये सब जाक क्वेश्चंस मु यूपीएससी पीवाईक्यू रु नै नेक्स्ट देखो सुंडा स्ट्रेट इंडोनेशिया टोरो स्ट्रेट्स देखि दिया तमे ये मेसिना स्टेट दिस आर वेरी इंपोर्टेंट ये केवल जेई करिथिबो से जानथिबो देयर इज अ डोबो स्ट्रेट दैट इज डावी स्ट्रेट डोबो स्ट्रेट इज देयर देन तुमको डावी स्ट्रेट इज देयर काटेगाट इज देयर तमरो तो बहुत सारा अछि ना मतलब जिब्राल्टर आरंभ करी बहुत सारा स्टेट अछि केते कहिबी मु बुझिबछ नै इंडियन ओशन रे जदि कह बाबल मंडप होगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज होगा मालाका होगा सुंडा होगा पैसिफिक ओशन रे जदि कहि तुम कौन टोरोस होगा देन तुम सेपटे रही तो मोस्ट इंपोर्टेंट जोटा कौटी आम चुचकिप सी एंड बेरिंग सी को करुचे बेरिंग स्टेट कथा नहीं जाओ दैट इज ऑल्सो देयर बहुत सारा स्टेट अच्छी चलो देखिए किए कर ठीक करुच तुम भर देखा किए कर दिस इज वेरी गुड क्वेश्चंस देखिए किए कर चलो फिर वर्ल्ड मैपिंग जदि कहीं करी मो क्वेश्चंस माने तेथरे गोटे भी दुनिया रे एमती कौन सी स्टेट नहीं जोटा मु पढ़ेनी चाहे से बोस्पोरस कथा नहीं जो चाहे से डार्डनाल कथा नहीं जो चाहे से स्टेट ऑफ कर्च कथा नहीं जो चाहे से स्टेट ऑफ काटेगाट कथा नहीं जो चाहे से स्टेट ऑफ मेसिना कथा नहीं जो चाहे से स्टेट ऑफ डोभर कथा नहीं जो चाहे से स्टेट ऑफ डाविस कथा नहीं जो चाहे से स्टेट ऑफ जिब्राल्ट कथा नहीं जो चाहे से स्टेट ऑफ फ्लोरिडा कथा नहीं जो केते सारा डेनमार्क स्टेट कथा नहीं जो एते सारा स्टेट अच्छे एंड ऑल इज करेक्ट सब परफेक्ट अच्छे ऑल आर करेक्ट राइट चलो फिर सेकंड वन 10 डिग्री चैनल ये तो समस्ते जानिछ कहि परिबो है ना ये इजी क्वेश्चंस बट मु जदि एठी ताको चेंज कर देबी ऑप्शन इफ आई चेंज द ऑप्शन आउ गोटे ऑप्शन देबी मु आउ गोटे ऑप्शन दउची रुह आउ गोटे ऑप्शन दउची नाउ डू द आंसर एवे आंसर करो कार निकोबर एंड लिटिल अंडमान एवे आंसर करो कोड हबो को कार निकोबर एंड लिटिल अंडमान नाउ डू द आंसर नाउ डू द आंसर एवे आंसर को कहना एटा तो बहुत इजी ही जाउछे ना राइट एटा को पढ़ दिस इज वेरी इंपोर्टेंट रादर देन दिस वन एवे अंडमान निकोबर कहीं न्यूज रे अछि
किए कहबो गालाथिया बे कोठी अछि अंडमान रे अछि ना निकोबर रे गालाथिया गालाथिया बे कोठी अछि अंडमान रे अछि ना निकोबर रे अछि एनीवन Galathea Bay is where? Andaman or Nicobar? Yes, this one is correct. Galathea Bay is where? Andaman or Nicobar? Galathea Bay. बहुत न्यूज रे अछि Galathea Bay is where? बहुत बढ़िया सुश्री कहउछंती ग्रेट निकोबर. It's a what? It's a Great Nicobar. This is famous for what? Galathea is famous for what? Leather back turtle. Leather back turtle. And also international shipments meant kara jauchi है ना. Okay, now comes to here. Which of the following pairs is not correct? Not correct. Next, the Great Barrier Reef Australia, the Great Rift Valley USA, Great Victoria Desert Australia, Grand Canyon USA. फटाफट देखो फटाफट आंसर बहुत बढ़िया इजी क्वेश्चन आठ इजी और कौन दरकार तुमको This is what? Great Rift Valley. This one is what? Africa. So answer is what? Africa. So this is the answer. Eastern Africa. Eastern Africa. Right answer will be Eastern Africa. Right. जना पड़ जीवो नॉट यूएसए. बाकी तमे देखो एटा तो समस्ते जानिचो आर लेंथ ऑलमोस्ट केते 2000 किलोमीटर. वर्ल्ड लार्जेस्ट. बाकी ये जो ग्रेट विक्टोरिया के ग्रेट सैंडी ग्रेट विक्टोरिया तानामी ये सब डेजर्ट कोठी ऑस्ट्रेलिया रे अछि सैंडी डेजर्ट. एटा कोठी अछि को रिवर ऊपर अछि ग्रैंड कैनियन के कहबो व्हिच रिवर ऊपर ग्राउंड कैनियन ग्रैंड कैनियन को रिवर ऊपर अछि ग्रैंड कैनियन. Here the both the continents, what continents is splitting away. Continent is what? Splitting away. एटा मन रखिबो एटा सोमालिया प्लेटा सेपरेट होउछि. हां एटा कोठी अछि कैनियन को रिवर ऊपर अछि ग्रैंड कैनियन. ग्रैंड कैनियन को रिवर ऊपर ए इजी क्वेश्चन कहि परिबो. कोलोराडो बहुत बढ़िया. यस कोलोराडो बहुत बढ़िया. सुस्मित जो संगीता मैडम and Subhasri बहुत बढ़िया जो सॉरी Sujata and Sasmita everyone. Colorado River. Now comes to here. Which of the following countries border with Mediterranean Sea? Jordan, Iraq, Lebanon, Syria. UPSC 2017 question. देखो यूपीएससी जिते क्वेश्चन पचारे कन्फ्लिक्टेड एरिया रो क्वेश्चन पचारे बा जो क्वेश्चंस द एरिया व्हिच इज रिमेन इन न्यूज जोटा एरिया जोटा रिमेन इन न्यूज रे थाई सेटू से क्वेश्चन पचारे. चलो फिर देखिबा आंसर देखिबा बहुत बढ़िया आसो समस्त करि परिबो. शत्रु कहउची सी, सुश्रीता संगीता नायक सी, अफरीन सी, लक्ष्मी प्रिया सी, दीप्ति शुभकांत सुजाता माय लाइफस्टाइल समीर एवरीबॉडी इज गोइंग फॉर द सी. यस द राइट आंसर इज सी. कहना जॉर्डन टा तमर कोठी डेड सी. हियर वुड बी व्हाट डेड सी. हियर वुड बी व्हाट डेड सी. केते तमर 400 सालिनिटी केते 400 डेड सी रे सालिनिटी केते 400 किछि भी जिंस पकेबो बुडीबो नाही. सीरिया देन इराक तो तमर ना इराक कोठी की रहउची इराक इज शेयरिंग गल्फ पर्शियन एटा कोठी रहिबो तमर पर्शियन गल्फ रे रहिबो. सो दैट इज व्हाई दे आर नॉट. So 3 and 4 is the right answer. 3 and 4 is the
राइट आंसर। ओके चलो फिर नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चंस मैपिंग ये देखु हमें मैपिंग वाला क्वेश्चंस वी आर गोइंग थ्रू द व्हाट मैपिंग क्वेश्चन वी आर गोइंग थ्रू मैपिंग क्वेश्चन चलो आलुशियन आइलैंड बेरिंग सी लिखाई छी बरमुंडा आइलैंड अटलांटिक ओशन फॉल्कलैंड साउथ पैसिफिक और पैसिफिक दिया है ओके चलो आंसर जब देखबा ए आसुची सी कहूची लक्ष्मीप्रिया सी कहूची समीर बी कहूची सस्मिता सस्मिता बी बी 2 and 3 ओके ये फॉल्कलैंड इज नॉट पैसिफिक इट्स अटलांटिक इट्स व्हाट अटलांटिक ये कोठी आसीबो अटलांटिक रे आसीबो एठी देखो हियर इज योर साउथ अमेरिका इन द साउथ अमेरिका हियर इज फॉल्कलैंड एठी कोन अछि तमरो फॉल्कलैंड आइलैंड so this one is in Atlantic Ocean this one is in what Atlantic Ocean South Atlantic Ocean रो पूरा ए टीप रे अछि एठी फॉल्कलैंड कोल्ड करेंट मध्ये अछि so that is why this is wrong this is wrong is wrong is wrong is wrong is the right one it's the right one then next which of the following pairs is correctly matched Gulf of Mexico between USA and Canada Gulf of Mexico between USA and Canada okay देखो भाई तब मैंने देखो Gulf of Myanmar between India and Sri Lanka Gulf of Mannar sorry Gulf of Mannar between India and Sri Lanka Gulf of Aden between Yemen and Somalia Gulf of Aden between Yemen and Somalia B and C both go for 6 number it's a easy one 6 number D Satru Sasmita D ये सब मैपिंग कराई तुम आराम से करि परिबो जणे ना आराम से करि परिबो कना एते मैपिंग क्लासेस देइछि मु थरोली क्लासेस करा जाइछि एंड आई होप के दिस मच ऑफ मैपिंग इज एनफ देखंतु प्रथम कथा गल्फ ऑफ मेक्सिको एठी कनाडा कुआडू आसला एठी तो गल्फ ऑफ मेक्सिको लिखा हिची तो कनाडा कुआडू आसे मेक्सिको ही आसीबो इट वुड बी व्हाट मेक्सिको कोठी होची गल्फ ऑफ मेक्सिको जदि तुम देखिया पई चाहो छ मैप रे हियर वुड बी गल्फ ऑफ मेक्सिको तले गल्फ ऑफ मेक्सिको इज व्हाट हियर इन दिस रीजन गल्फ ऑफ मेक्सिको एठी कनाडा तो एठी रहिला एटा तो मेक्सिको सो यूएसए एठी रहिला कनाडा एठी तो कोमती हेबो दिस इज तो दैट मींस दिस वन इज करेक्ट wrong and this 2 is correct हे गला practice mapping news जदि हम देखिबा state of Hormuz connect what 7 number 7 number B ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो स्टेट ऑफ हार्मोन्स कोठी अछि हमरो एडी अछि एटा तमरो चोक पॉइंट ऑयल सब एपट तो जाउछि इंपोर्टेंट एरियाटा जानछ अबे कोन है ना ये होछि तमरो भाबो अरेबियन पेनिनसुला दिस इज गल्फ ऑफ पर्शियंस राइट तो एपट रहबो सो दिस इज द गल्फ ऑफ पर्शियन ये रहिला एपट रेड सी so this is the area eight number and the last two question आप रे अच्छे ना नहीं okay okay last 2-3 questions देख state of hormones हमें देखिले बोधे okay एटा बाबल मंडप देखिबा 9 नंबर गला ना 8 ओ 9 नंबर टा देखिबो कि
9 नंबर हो देख हाँ हाँ एडे देखी थी 9 नंबर 9 नंबर देख 9 नंबर से कौन इट इज द ओनली रूट टू ऑयल टैंकर्स फ्रॉम द पर्शियन गल्फ से कौन ताले हम देखा स्टेट ऑफ हार्मुज इट कनेक्ट्स द पर्शियन गल्फ टू ओमान इराक यूएई ओमान शेयर इट्स बॉर्डर से कौन यूएई तो शेयर करुच्ची ईरान सेपटे करुच्ची ओमान एपटे करुच्ची ठीक अच्छे यहाँ तो ठीक अच्छे देख प्रथम कथा जदि आम देखा स्टेट ऑफ हार्मुज को जदि माने टिके बहुत प्रिसाइजली जीवी ना आई वुड गो नॉट यूएई this is correct, this one is correct, UAE is not correct. This is the only route oil tanker from the Gulf of Persian. This is not the only route. आमे चाहिले अलगा route भी open करी परिबा मतलब other route can be opens from here. As of now I will not say this is not the only route, right? Other routes are there, but जदि आमे जेबा कि I would say this is only कि नहीं आकु टिके चेक करिवो this is not only, but UAE तो साधारणतः शेयर करूनी तो यहाँ तुम कौन से स्टेट ऑफ हार्मुज बॉर्डर ना सो दैट मीन्स 3 गॉट जदि आम कह आज ऑफ नाउ दिस इज ओनली सो 1 and 2 ऑप्शन तो अच्छी 1 and 2 को जापर फिर भी टिके देख कौन हो पार ऑल हम हेले यूएई तो करूनी ना शेयर यूएई करूनी से तो ओमान करुच्ची यूएई तो करूनी हाँ यूएई तो करूनी 1 and 3 जदि हम तो यहाँ जदि तुम मैपटा देखो ना मुझे ड्र करुच्ची तुम मैंने भी देखु था यहाँ टे कन्फ्यूजिंग हो आंसरटा कहीं ये मुझे देख मुझे ड्र करके देखा सो दैट तुम मैंने जापर लेट से मुझे ड्र कली तुम इंडिया इज लाइक हियर एटा आफ्रिका रहा एंड दिस इज गल्फ ऑफ ओमान तो यही जगह ना यहाँ ओमान एक्चुअली ये ओमान रही अच्छी ओमान और ईरान किंतु ये यूएई देइछि ना तो ये भूल हम 2 जदि भूल हो जाऊँगी 2 गट करेक्ट 2 हो तो सी ही बाहर यूएई शेयर करूनी भल से जूम करके देख जूम करके देख भल से जूम करके देखिबो हैला एटा टिके कंट्रोवर्सी एटा जूम करके पूरा मैप को देख मैप को जूम करके देखिबो मु तो एते थोड़ा पढ़ी एंड आई होप दैट इज मु ठीक ठाक अच्छी पूरा जूम करके देखिबो यूएई इज नॉट पार्ट ओमान एंड ईरान हबो यूएई इज नॉट पार्ट राइट ताको जूम करी मैप को देखिबो देन जानी परिबो तमे बावल मंडप ओएसएल चोक पॉइंट न्यूज रे अच्छी तो पचारे ना बावल मंडप the best describes for which region it connects the Red Sea and the Mediterranean Sea directly it lies between Yemen and Djibouti yes 10 number question कौन थला एटा भूल भाल पढ़ी देली कि मु ऑप्शन गल्फ ऑफ पर्शियन की इट इज ओनली रूट तो ठीक तो अच्छे ओके हाँ 10 नंबर 10 नंबर बी चलची महांती दीप्ति सुश्री माय लाइफस्टाइल आफरी एवरीबॉडी इज अंकिता एवरीबॉडी इज गोइंग फॉर द बी बहुत बढ़िया देखा कौन कह बाबलमेंट ऑफ येमेन एंड जिबोटी बहुत बढ़िया ये कौन अच्छे सीड कंट्री मीनिंग अच्छी कही हाँ सीड कंट्री मीनिंग कही सीड कंट्री मीनिंग कौन मुझे जो सीड SEED S for Somalia, Eritrea, Ethiopia, Djibouti. These are the seed countries. Somalia, Eritrea, Ethiopia, and D for Djibouti. Yes, the right answer is here. B is the correct answer. Then Gulf of Oman is bordered by whom? Eleven. 11 questions. And the last 2 questions. Gulf of Oman.
11D एमएन केमती आसीगला इथरे एमएन तो आसीबनी 4 तो आसीबो नहीं 4 को कैंसिल करो 4 वुड नॉट बी एमएन केमती हे जबो कहना गल्फ ऑफ ओमान को जदी तो मैप देखि दिए समझते इफ यू सी गल्फ ऑफ ओमान ना गल्फ ऑफ ओमान को जदी देखिबो तमे राइट गल्फ ऑफ ओमान को जदी तमे देखिबो हियर इज व्हाट गल्फ ऑफ ओमान एपटे ईरान अछि एपटे ओमान अछि एठी तो येमेन तो एठी रहउछि येमेन कोठी अछि एठी तो येमेन वुड नॉट बी पार्ट 4 गॉट ऑटोमेटिकली कैंसिल 4 तो कैंसिल हे जिवो पाकिस्तान भी नुहे पाकिस्तान तो हबनी पाकिस्तान दूर रे अछि तो पाकिस्तान वुड नॉट बी देयर सो 1 and 2 विल बी आंसर तो 1 and 2 नहीं तो छाड़ आंसर वुड बी व्हाट 1 and 2 आंसर वुड बी व्हाट 1 and 2 हबो पाकिस्तान आसीबो नहीं एथरे 1 and 2 हबो इट वुड बी व्हाट 1 and 2 द लास्ट क्वेश्चन कट स्ट्रेट न्यूज़ रे थिला द लास्ट क्वेश्चन पाकिस्तान शेयर करूची हाँ पाकिस्तान शेयर करूची गल्फ ऑफ ओमान भूल कही ना कौन चेक करुच्ची सेटा अरेबियन सी कही परिबो सेटा को सेटा ही परिबो पाकिस्तान एटा दे जो पाकिस्तान को नहीं जाओ हैला 1 2 3 नहीं जाओ पाकिस्तान को नहीं जाओ आउ तो किछि नाही ना ऑप्शन रे तो सेटा ही हबो आंसर आ तो किछि नाही ऑप्शन रे कोन करा जबो जेहेतु ऑप्शन रे किछि नहीं सेटा ही नहीं जबो आ कोन हबो राइट गो फॉर दैट and the last state of course black sea and देखा देखा एजियन सी नॉर्थ सी तो आंसर तो मिली जाउची फटाफट ए एटा रशिया जो अटैक करिछि सेति पे न्यूज़ रे थिला ए कोन पे न्यूज़ रे थिला बिकॉज ऑफ रशिया जो अटैक कला सेही टाइम रे हम जो कोन स्टेट ऑफ कॉर्च ऊपर कोन अछि द लार्जेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ यूरोप दैट इज व्हाई द 12 तो ये आंसर अछि तमन को पीडीएफ मिल जो कोठी वेस्टमिंस्टर ग्रुप रे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो and the telegram group is called Westminster कौन Westminster telegram group join this Westminster telegram group and StudyIQ दीटा तुमको मिल जाओ and the answer also there okay ठीक अछि चलो फिर तो आज पे ये थिला 1 आवर सेशन प्रत्येक दिन हमें 1 आवर सेशन नहीं किया से तो ये थिला ज्योग्राफी रो 6 लेसन तापर हमें क्लाइमेटोलॉजी खत्म हो गला नाउ इंडियन ज्योग्राफी ओडिशा ज्योग्राफी एमसीक्यू कल टू स्टार्ट हो थैंक यू एवरीवन गुड नाइट टू ऑल